Good morning, students. My name is Amandeep Kaur. Today's my topic is branches of psychology. It has many branches and fields of studies. For convenience, it may broadly be divided into pure psychology and applied psychology. अब इसमें हम पढ़ेंगे ब्रांचेस में, 2 ब्रांचेस पढ़ेंगे इसके, प्योर और अप्लाइड। प्योर भी फर्दर डिवाइडेड होती है 8 ब्रांचेस में, और जो अप्लाइड होती है वो 6 में डिवाइडेड होती है। फर्स्टली हम देखेंगे प्योर साइकोलॉजी। प्योर साइकोलॉजी में क्या क्या आ जाता है? फर्स्ट आ जाता है जनरल साइकोलॉजी, एबनॉर्मल साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी, फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी, पैरासाइकोलॉजी, जियोसाइकोलॉजी, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। और अप्लाइड में क्या क्या आता है? एजुकेशनल साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, लीगल साइकोलॉजी, मिलिट्री साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइकोलॉजी। नाउ फर्स्ट हम करेंगे प्योर साइकोलॉजी की जो आगे ब्रांचेज हैं उन सब की थोड़ी थोड़ी एक्सप्लेनेशन। फर्स्ट आ गई प्योर साइकोलॉजी। प्योर साइकोलॉजी में प्योर साइकोलॉजी क्या होती है? इट प्रोवाइड्स द फ्रेमवर्क एंड थ्योरी। इट कंटेन्स डील्स विद द फॉर्मुलेशन ऑफ साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स एंड थ्योरीज। इसमें क्या आता है? ये क्या प्रोवाइड करती है? फ्रेमवर्क एंड थ्योरीज। इसके किस चीज़ से डील करती है? इसमें मेनली जो साइकोलॉजी की थ्योरीज और प्रिंसिपल्स होती हैं उसकी फॉर्मुलेशन होती है। इट सुजेस्ट वेरियस मेथड्स एंड टेक्निक्स फॉर द एनालिसिस, असेसमेंट, मॉडिफिकेशन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ बिहेवियर। ये बहुत से हमें मेथड सुजेस्ट करती है, जो टेक्निक सजेस्ट करती है, जिससे कि हम एनालाइज कर सकें बिहेवियर को, असेस कर सकें, मॉडिफाई कर सकें और इम्प्रूव कर सकें। आगे इसकी ब्रांचेस कौन कौन सी थी प्योर साइकोलॉजी की? जनरल साइकोलॉजी। जनरल साइकोलॉजी क्या होती है? इट डील्स विद द फंडामेंटल रूल्स, प्रिंसिपल्स एंड थ्योरीज ऑफ साइकोलॉजी इन रिलेशन टू द स्टडी ऑफ behavior of normal adult. Abnormal psychology. It deals with the behavior of individuals who are unusual. It studies mental disorders, their causes and treatment. Social psychology. It deals with the group behavior and interrelationship of people with other peoples. इसमें क्या होता है कि एक ग्रुप में लोगों का बिहेवियर कैसा है एक दूसरे को लेके। इट स्टडीज वेरियस टाइप्स ऑफ ग्रुप फिनोमिना सच एज पब्लिक ओपिनियन, एटीट्यूड, बिलीव्स एंड क्राउड बिहेवियर। नेक्स्ट आ गया फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी। फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी में क्या होता है? दिस ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी डिस्क्राइब्स एंड एक्सप्लेन the biological and physiological basis of behavior. It concerns the structure and functions of sense organs, nervous system, muscles and gland underlying all behavior. Parapsychology. It deals with extrasensory perception, causes of rebirth, telepathy and allied problems. Geopsychology. This branch of psychology describes and explains the relation of physical environment, particularly weather, climate and soil with behavior. नेक्स्ट आ गया डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। डेवलपमेंटल में क्या होता है? इट स्टडीज द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। This branch of psychology describes the process of growth and development in relation to the behavior of an individual from birth to old age. It further divided into child psychology, adolescent and adult, and old age psychology. Experimental psychology. This branch of psychology studies the ways and means of carrying out
psychological experiments by using scientific methods. Experimental psychologists do basic research in an effort to discover and understand the fundamental and general causes of behavior. They study basic processes such as learning and memory, sensations, perceptions and motivations. नेक्स्ट आ गया हमारा अप्लाइड साइकोलॉजी. अप्लाइड साइकोलॉजी क्या होती है? इन अप्लाइड साइकोलॉजी द थ्योरी जनरेटेड थ्रू द प्योर साइकोलॉजी फाइंड्स इट्स प्रैक्टिकल शेप. इसमें क्या करते हैं, जो हमने प्योर साइकोलॉजी में थ्योरीज और प्रिंसिपल्स फॉर्मुलेट किए थे, अब उनको हम क्या करेंगे, प्रैक्टिकल फॉर्म में लेके आएंगे. इट्स एप्लीकेशंस ऑफ साइकोलॉजी, साइकोलॉजिकल रूल्स, प्रिंसिपल्स, थ्योरीज and techniques with reference to the real practical life situation. ब्रांचेस कौन कौन सी होती हैं अप्लाइड साइकोलॉजी की? एजुकेशनल साइकोलॉजी, इट is which tries to apply the psychological principles, theories and techniques to human behavior in educational situations. The subject matter of this branch covers psychological way and means of improving all aspects of teaching learning process. Next is clinical psychology. It describes the causes of mental illness, abnormal behavior of a patient and suggests treatment and effective adjustment of the affected person in the society. Industrial psychology. Industrial psychologists apply psychological principles to assist public and private organizations with their hiring and placement program, the training and supervision of their personnel and the improvement of communication within the organization. They also counsel employees within the organization who need help with their personal problems. Legal psychology, it tries to study the behavior of a person like clients, criminals, witness, etc. With the help of applications of psychological principles and techniques, the root causes of the crime, offense, dispute or any legal case can be properly understood through the use of this branch of psychology. Military psychology. This branch of psychology is concerned with the use of psychological principles and techniques in the military science. How to keep the morals of the soldiers and citizens high during wartime. How to secure better recruitment of the personnel for the fighting capacities and organizational climate and leadership, etc. are the various topics that are dealt with in this branch of psychology. Political psychology. This branch of psychology relates itself with the use of psychological principles and techniques in studying political and driving political gains.